Hello, my dear students and friends. So, welcome to our RSV Physics Class. So, this is lecture 3 on kinetic theory of gas for your class 11 NEET JEE and board exam. So, this is theory class. Later that I will be explaining on different types of problems. Okay. So, in previous class I have derived the equation of pressure equation. So, that is, you know, P equal to 1/3 rho C RMS square. So, and in that situation, that total energy of the system, you know, half m0. M0 means m0 equal to m into total number of molecule. M0 C RMS square. Okay, and you know the energy equal to 3/2. This is your 3/2 RT. That energy I have also derived ना. तो concept E proportionality is in last lecture आप देख लीजिए lecture number 2. Okay, so from here you can write CRMS equal to root over of 3 RT over M0. Okay, so if your mass M0 means small m into n, so if your mass is smaller, मतलब जैसे लास्ट एग्जाम्पल में हमने UF6 238 एंड यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड 235, इसमें हम एक्सप्लेन किए थे. व्हेन U235 is lesser mass than 238, then its CRMS will be higher. So its speed is higher, so it is more diffusing and will come out and you can segregate by diffusing method. Okay, so CRMS equal to root over of 3 RT by M0. This is your recap of previous class. Okay, now in this class this is very much important because one question you will be coming from this class also. Every year there is a common question from this class. So you have to know first degrees of freedom, then law of equipartition of energy. What is the degrees of freedom? So degrees of freedom means if you are going outside your home after 12 o'clock, this is your third degree your parents will give. Not that much. Okay, so degrees of freedom, this is the number of coordinate required, to locate any molecule, any particle in system. Okay, so कितना number of आपका coordinate required to locate this position of the particle. So number of molecule जो है आपका, so total जो है आपका, if your degrees of freedom equal to 3n minus k, this why I will explain whether this is 3n into k. So now if there is a number of molecules, different numbers of molecules here, है ना? So let's consider this number of molecules and this is single monoatomic. Okay, monoatomic के केस में क्या होगा आपका? So there is a monoatomic molecules जो है एक ही एटम है ना. So उसमें या एटम, एक एटम का आपको एक्सप्लेन करने के लिए क्या करोगे आप? सो मोनोएटोमिक केस में जो है आपको टोटल एक दिस इज वन कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिकल. ओके, सो दिस इज योर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज रिक्वायर्ड x y z and if there is a n numbers of molecules, so you require 3n for monoatomic molecule. Diatomic molecules, this is diatomic means this is कार्बन मोनोक्साइड है ना, इस टाइप का जो है. सो इस टाइप का मॉलिक्यूल जो है ना यहाँ पर डबल बॉन्ड है. और जो है एक अच्छा जो है आपका ये मॉलिक्यूल कार्बन मोनोक्साइड मॉलिक्यूल में जो है आपका, अच्छा इसमें जो है आपका टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हाउ मच. सो हियर single atomic molecules
K is your कांस्टेंट. कांस्टेंट मीन्स वो कितना एक दूसरे से बांधा हुआ है. कांस्टेंट मतलब हमारी जैसे खेत में जो है भेड़ बकरी को यहाँ पे वो ये चर रहे हैं ना, इसको रस्सी से बांधा हुआ रहता है ना कभी कभार. सो इसका वो जितना रेडियस है उससे वो घास ये सब बेल जो है ना वो उतना ही घास खा सकता है ना. सो ये इसका कांस्टेंट है. देख एक रस्सी से उसको बांधा हुआ है. जस्ट लाइक दिस. So this is just like a, so this bonding is your just एक one types of धागा. So it is connected with just like a spring. Sometime it is spring, sometime it is it is non-rigid molecule. जैसे CO molecule is non-rigid. That I will coming non-rigid. मतलब it is just like a spring, and sometime it is like a wire. मतलब rigid molecule. इस टाइप का मॉलिक्यूल भी है ना. So if it is monoatomic molecule, so total number of degrees of freedom is 3. One molecule XYZ 3 degree of freedom, and total in number of this is total 3n degree its dimension, and K is a constant. For diatomic molecule degrees of freedom will be 3 into 2, and constant is एक दूसरे से बांधा हुआ है. इसमें एक दिस इज ऑल मॉलिक्यूल्स आर फ्री. सो देयर इज नो कांस्टेंट फॉर मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल. फॉर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल देयर इज ए कांस्टेंट 1. ये एक धागा से बांधा हुआ है तो एक कांस्टेंट है ना. सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज 5. नाउ फॉर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम just quickly. 3 in 3 कितना कांस्टेंट 1 2 3. So this is आपका 6. Now here I will be quickly writing here what is monoatomic molecules, monoatomic degrees of freedom. This is F. 3 diatomic, 5 ट्राइएटॉमिक. ट्राइएटॉमिक केस में कितना है आपका? ट्राइएटॉमिक केस में दिस इज 6. एंड पॉलीएटॉमिक केस में दैट विल बी एक्सप्लेनिंग हियर. नाउ हियर यू कैन राइट 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. दिस इज ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशन जो है ना. अब यहाँ पे जो है आपका पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में, पॉलीएटॉमिक की केस में आपको कितना होगा? ट्रांसलेशन 3 ट्रांसलेशन प्लस 3 जो है रोटेशनल, 3n ट्रांसलेशन 3 रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल है ना. जो है यहाँ पे वाइब्रेशनल कुछ रहते हैं. और यहां पे भी आपको क्या लिख सकते हो? डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. इफ दिस इज योर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, दिस इज डायएटॉमिक मॉलिक्यूल. ट्रांसलेशनल कौन सी कितने डायरेक्शन पे कर सकते हैं? 3 है ना. और रोटेशन कौन सी एंगल में कर सकते हैं? एंड इट इज इन दिस डायरेक्शन है ना. सो और एंड विथ रेस्पेक्ट टू जो है आपका दूसरी एक्सिस जो है, दिस एक्सिस में आपका या रोटेशन में दिस इज सिमेट्रिक. सो इसमें आपका रोटेशन में ज्यादा एनर्जी नहीं है. सो दिस यू कैन इग्नोर. सो वन एक्सिस इज दिस इज डायएटॉमिक, वन एक्सिस इज अराउंड दिस रोटेशन एंड अनदर एक्सिस इज प्योर दिस एक्सिस है ना. ये इधर और एक इधर, ये एक्सिस और ये एक्सिस. इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो रोटेट करता है इस तरीके से रोटेशन, और ये इस तरीके से रोटेशन. सो देयर इज ए 3 ट्रांसलेशन एंड 2 रोटेशनल. दिस इज 5. सो इस तरीके से यू कैन राइट दिस. एंड इफ द मॉलिक्यूल इज नॉट rigid, so there is a vibrational degrees of freedom. Okay, so every vibrational degrees of freedom, so there is a 2 vibrational
vibrational degrees of freedom. So vibration मतलब vibrational degrees of freedom. Now ये अब ये degrees of freedom अब यहाँ पे बताते हैं. So vibration means there is a kinetic energy and potential energy, Ke plus potential energy. Now coming to equipotential potential and laws of equipotation of energy. So molecules total energy of molecule, total energy of molecule is distributed uniformly in all degrees of freedom. All degrees of freedom total kinetic energy, it is uniformly distributed, and in 1 degrees of freedom it is half kV into T. Okay. So for 1 mole gas, how much it is? For 1 mole gas it is half RT. So in numbers of molecule, so R equal to Kb into, this is according to this is a Boltzmann constant. So this is given by L Boltzmann. This is into N Avogadro, total Avogadro number. Okay. So now so per mole, so this is 8.31 joule per mole per Kelvin. Okay. Now again, now I will be coming to equipotential. So total kinetic. So now quickly I will be explaining on thermodynamics. What? Thermodynamics. So from first law of thermodynamics, you know, total heat equal to kinetic energy plus P dV. That you know. So this is internal energy and this is the work done. So for gas there is a 2 types of specific heat. So you know Q equal to AMST है ना. For 1 mole जो है आपका, for 1 mole gas you can write this is CVT or Cp into T. 1 mole gas. So this is a molar specific heat. Molar specific heat. Okay. Equal to du plus P dV. Okay. So now CVT. So for your constant volume means this is dV0. So CVT equal to du. So yes, Cp जो है dt small t है ना. So Cv equal to du dt. So for 1 mole monoatomic gas, so how much it is? So half RT. So 1 mole monoatomic gas molecules जो है एनर्जी इक्वल टू मतलब Q इक्वल टू जो है आपका dQ इक्वल टू du है ना. dQ इक्वल टू du है, dQ इक्वल टू Cv dt. सो Cv इक्वल टू du dt है और इक्वल टू dQ dt. ओके. सो ये सभी लिख सकते हो dQ dt. सो कितना एनर्जी है आपका 3 into half RT and this is d dt. So this is equal to 3 by 2 R. So Cv equal to 3 by 2 R. Now you know from thermodynamics Cp minus Cv equal to R. So Cp equal to
Cv plus R. Okay, so this is Cp equal to 3 by 2R plus R. So this is 5 by 2R. So monoatomic gas gamma Cp by Cv equal to 5 by 3. Okay, for monoatomic gas gamma, and these types of question will be obviously coming in your exams. Okay, and this is for monoatomic gas. You just calculate for diatomic gas. Okay, let's calculate diatomic rigid gas. Okay, here rigid and non-rigid. So for diatomic gas total energy is मतलब Q equal to E जो है आपका 5 by 2 RT. This is 5. Okay, degrees of freedom. So total degrees of freedom. So n, this is for n number of molecules, this is for per mole. Okay, now so आपका Cv equal to dE or dQ dt equal to 5 by 2R and Cp equal to 7 by 2R, gamma equal to 7 by 5. Okay. So here you can obviously write a general equation. You can write general equation in terms of, so here see Cv equal to F by 2R, where F is degree of freedom. Okay, here 5 and Cv equal to F by 2R, F is 5 and Cp equal to F by 2R plus R. So कितना हो रहा है आपका, है ना, F plus 2 F plus 2 by 2 into R. So Cp by Cv equal to F plus 2 by 2 by F by 2. Okay, so this is 1 plus 2 by F. So this gamma equal to 1 plus 2 by F. If you know degrees of, so one types of question will be there if you for any molecules. So if your F for any number of rigid molecules, if your kind for this is for your rigid molecules. Okay, for rigid any types of जो है आपका molecules, if your degrees of freedom is this, so what is the relation? You can from the relationship gamma equal to 1 plus 2 by F, and if you know F, then for, so you can calculate जो है आपका Cp by Cv. Okay, so for monoatomic molecules, gamma for monoatomic molecules, how much it is? 1 plus 2 by 3. So this is 5 by 3 हमने कैलकुलेट किए थे. For diatomic molecules, F is 5. F for F मतलब gamma, the gamma diatomic molecules, how much it is? 1 plus 2 by 5, है ना. So this is 7 by 5. ये कैलकुलेट किए थे ना कुछ टाइम पहले. So from using this simple equation you can calculate everything. Now if the molecules, again I am writing again and again I am telling it, if the molecules is not rigid, then what happens? If molecules is not rigid, just case of कार्बन मोनोऑक्साइड. सो कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में क्या होगा आपका? सो इसमें दिस देयर इज ए वाइब्रेशन एंड वन वाइब्रेशन मींस 2 काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल. सो 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. दिस इज 2 हाफ
RT. Okay, so for non-rigid, let's calculate for non-rigid diatomic molecules. So diatomic molecule केस में क्या होगा आपका 5/2 RT plus this is RT. So total this is Q और एनर्जी जो है ना, so this is 7/2 RT है ना. So CV equal to 7/2 R, CP equal to 9/2 R, gamma equal to 9/7. Okay, so here degrees of freedom is, so in that case degrees of freedom you have to add 2. So to vibrational mode. So degrees of, so from equation 1 plus 2/f, if you calculate gamma, so here F is 5, 3 translational, 2 आपका जो है 2 rotational and 2 vibrational mode. Vibrational modes means one kinetic energy and another potential energy, 7. So this is, so gamma equal to 9/7. This is the case. Okay, so in general for your polyatomic molecules, so you have to write for polyatomic molecules when it is non-rigid. In case of this is non-rigid, so for polyatomic molecules you have to write जो है polyatomic molecules 3, this is 3/2 RT, 3/2 RT है ना, प्लस F मीन्स यहाँ पे 1 degrees of freedom जो for 1 dimension. So 1 polyatomic molecule, this is linear polyatomic molecule. So in 1 dimension, so you have to consider kinetic and potential energy. So this is half RT plus half RT. So this is RT. So this is, you can write जो है okay. So now this is your 3 RT. Okay, so this is the total energy. 3 degrees of polyatomic molecule, 3 rotational vibration motion, rotational and 3 vibrational है ना, and 1 जो है आपका 3 rotational, this is translational, 3 rotational and this is vibrational for gas. So this is your 3 plus 3 plus F into RT, and again this is Q है ना. So CV equal to 3 plus F into R, and CP is CP equal to CV plus R. So this is 4 plus F. So here gamma equal to 4 plus F over 3 plus F for polyatomic molecules. Okay, now so you have to consider this is for gas molecule. For solid molecules there is no, I mean it is solid molecules, so molecules are not गैस मोलिकुल से रोटेशन हो सकता है, ट्रांसलेशन हो सकता है, ऐसे जैसे आगे ये आपका गैस मोलिकुल ये इधर जा सकता है, रोटेट कर सकता है, वाइब्रेट कर सकते हैं, बट solid in case of solid, so now you see the degrees of freedom is connected with specific heat. So this is the big physics behind this degrees of freedom and specific heat. Okay, so in solid molecule, so there is only no translation. Solid में कोई लोहे के अंदर कोई molecule translate कर रहा है या rotate करता है क्या? But when it is heating, only molecules vibrating. So if it is solid molecules, so इस तरीके से solid molecules, so it is only ये आपका solid molecules, it is only vibrating, just like a connected with just like a spring, है ना? So it is only vibrating. So energy is Q equal to जो है 3 आपका vibration में total
इन वन डायमेंशन जो है आपका टोटल 3 जो है RT, एंड इन 3 डायमेंशन दिस इज 3 RT. Okay, so in case of CV equal to 3R in solid. Okay, but in case of liquid, so specific heat of water इसको एस्टेब्लिश करेंगे. इन केस ऑफ लिक्विड, सो दिस इज जो है डायटोमिक मॉलिक्यूल जो है आपका, ये ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल, इसमें जो है आपका लिक्विड मतलब जैसे वाटर के केस में आपका 3 मॉलिक्यूल्स, 3 नंबर्स मॉलिक्यूल्स, एक 1 एटम के लिए ये जो है आपका, सो 3 एटम के लिए आपका अब कितना होगा, CV इक्वल टू 3 into 3R equal to 9R, टोटल 1 मोल पर मोल है ना, 9R. सो 1R इक्वल टू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन. सो दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 27 जो है आपका 9R है ना, 72 मतलब 75 के आसपास है ना, 75 जूल पर मोल पर केल्विन है ना. दिस इज CV. You know the specific heat of water is, specific heat of water, how much it is, 1 calorie per gram per Kelvin. Okay, 1 calorie is how much, 4.2 joule. Okay, 4.2 joule per gram per degree Kelvin, per Kelvin. Okay, so 1 mole hydrogen, 1 mole water, how much it is weighed from chemistry, 18. so आपका 1 मोल पर मोल करेंगे तो कैसा होगा, 4.2. so CV equal to per mole 4.2 into 18 joule per mole per Kelvin. so how much it is, 36 75.6, इधर भी 75.6 के आसपास होगा, जूल पर मोल पर केल्विन. सो दिस इज मैचिंग. सो ऑल द theories now we have discussed, this is matching, and this specific heat of water, it is measured quantity, and whatever we have discussed, it is theoretical. So from theory and your measured theory and measured data, now it is validating. So all the theory is true. So this is 9R and 975 joule per mole per Kelvin, and you know the specific of what is 1 calorie, सबसे ज्यादा है इसका है ना. So how much it is, so 75 joule mole per Kelvin. So it is matching. Okay, now the actual challenges is coming here. So if you go lesser and lesser temperature, when temperature is going towards absolute zero temperature, when T is 0, then specific heat का क्या होगा आपका, so specific heat is going to be 0 है ना. so specific heat going to 0. so why it is, so specific heat is actually related with degrees of freedom. so in that case, when absolute zero temperature is 0, मतलब सब all the degrees of मतलब molecules is just in condensed state, molecule सब condense होके चुपचाप बैठा है ना. so degrees of freedom going to be frozen, but according to classical theory, degrees of freedom will remain constant every time. so टेम्परेचर 0 हो रहे, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फ्रोजन हो रहे, इसलिए आपका स्पेसिफिक 0 हो रहे. बट क्लासिकल थियरी तो बोल रहा है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट है ना.
this ambiguity is solved by Einstein by using क्वांटम ये है ना. सो वन क्वांटम थ्योरी यूज करके इसको सॉल्व किए थे. सो इसमें जो है आपका इवन फॉर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, सो some energy is required to activate डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. कुछ एनर्जी तो रहना चाहिए, नहीं तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहाँ, मतलब उसका तो वाइब्रेशन सब स्टॉप हो जाएगा. सो देयर इज कम इनटू 0 पॉइंट एनर्जी. इवन देयर इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हाफ एच क्रॉस ओमेगा. आप देखोगे बाद में जो ये इसका ई जीरो पॉइंट एनर्जी, मतलब इवन एट 0 केल्विन टेम्परेचर देयर इज ए स्मॉल एनर्जी. दिस इज 0 पॉइंट, एकदम जीरो उसको बोलता है 0 पॉइंट एनर्जी. दिस इज सो फ्रॉम हियर द कॉन्सेप्ट ऑफ वाइब्रेशन also at even 0 Kelvin there is a small vibration, and this due to vibrational modes. From this the vibrational modes is coming into picture. So vibrational mode, due to vibrational mode there is a 0 point energy, and from which is actually activating degrees of freedom. That is this theory you will be learning in your graduation classes. This is not for your standard till now, but for sake of completeness I am quickly explaining it. Okay, पढ़ते रहिए. Thank you.